Hello parents, how are you? I hope you all are good and wonderful. अभी तो नवरात्रि चल रही है तो सब एकदम जोश में होंगे। फिर भी रात की थकावट के बाद भी आप इस सैटरडे की दोपहर को आफ्टरनून को हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगा। सो आज का हमारा सेशन है वो किड्स के एंगर इश्यू पे है कि हमें बहुत क्वेरीज रहती है कि मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, कभी भी किसी के भी सामने गुस्सा कर देता है, किसी भी बड़े के सामने बोल देता है। तो ये सब हमें क्वेरीज आती रहती है, इसीलिए आप सबके सजेशंस भी आए थे इस टॉपिक के, तो हमने ये आयोजित किया हुआ है ये वर्कशॉप। वंडरफुल। वैसे विश्वा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हम नवरात्रि की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, राइट। नवरात्रि पूरी एक एनर्जी का त्योहार है। जब भी हम माता जी की ऊर्जा जो है उसको हम पूरा उसको मतलब सेलिब्रेट करते हैं उस ऊर्जा को। और जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो भी एक तरह की एनर्जी है। और उसी उसी गुस्से को किस तरह से सही में मेंटेन करना, उसको किस तरह से मैनेज करना, इट इज वन ऑफ द चैलेंज फॉर मेनी ऑफ द पेरेंट्स, जो बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें पास्ट में बताया था। एंड दैट्स व्हाई दिस वंडरफुल सेशन हैज बीन अरेंज्ड। Yeah, so thank you very much, everyone who has just joined this session. And due to some issue with Zoom updates, कुछ ऐसी updates हैं जिसकी वजह से ना हम सारे लोग एक साथ ऑटोमेटिकली Zoom सेशन में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आपके कोई कलीग्स या फिर कोई आपके फ्रेंड वगैरह है जो है उसको जूम सेशन ज्वाइन करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो प्लीज हमें आप लोग बताएं, मैसेज कीजिए, हम डेफिनेटली उसकी हेल्प करेंगे, राइट। जूम के कुछ अपडेट्स की वजह से हम एक साथ सारे लोग ऑटोमेटिकली इस सेशन में नहीं आ पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, राइट। बट इवन दो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू, लाइक सुरेश जी, नियंता जी, प्रियंका जी, प्राची जी, Bhumika ji, iPhone, someone's name is iPhone. So welcome to this session। and इस नवरात्रि के त्योहार को, इस एनर्जी को हम सेलिब्रेट करते हुए इस जो चैलेंज है हमारी, उसको भी हम किस तरह से सॉल्यूशन उसका ढूंढे, ये इस सेशन में हम सीखेंगे। यस विश्वा, ओवर टू यू, आप जो कहना चाहती हैं प्लीज। यस, तो आप में से कौन कौन से पेरेंट्स ये बिलीव करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बेवजह गुस्सा करता है, एंगर इश्यू उसे बहुत है। आई नो सभी के बच्चे थोड़ा इरिटेट करते ही है, लेकिन सम पेरेंट्स आस्क फॉर दैट सॉल्यूशन। सो प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा जो है वो गुस्सा करता है और उसके लिए आप कुछ करने की जरूरत है, देन यस सुरेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। या एनीवन एल्स, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट एवर यू फील, आपको जो कुछ भी लगता है। अगर आपका बच्चा गुस्सा नहीं भी करता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, कंप्लीटली फाइन। ओके, वी विल बेसिकली अंडरस्टैंड कि बच्चों के बिहेवियर को इस सेशन में सिर्फ गुस्से की बात नहीं है। ज्यादातर लोग बच्चे गुस्से करते हैं, उसको हैंडल नहीं किया कर पाते, इसकी वजह से हमने इस सेशन को रखा है। बट अल्टीमेटली इस सेशन के अंदर हमारे जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट है, हमारा जो मेंटर है, वो ये बताएंगे कि एग्जैक्टली बच्चों के बिहेवियर किस तरह से होते हैं और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द एंगर, इट इज ऑल्सो अबाउट द अदर थिंग ऑल्सो। यस प्रियंका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। यस विश्वा, प्लीज गो अहेड। ओके, तो आज हम अपने स्पार्टन किड्स के बारे में बात करते हैं। स्पार्टन किड्स क्या है? स्पार्टन किड्स जो स्पेशली किड्स के लिए बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स, एआई फ्लैश कार्ड्स, गेम्स, पजल एंड मेनी मोर। ये जो हम सारे फ्लैश कार्ड्स और ये सब हमने डिजाइन किया है, ये हमने बहुत सारे साल की रिसर्च के बाद और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के रिव्यूज लेकर हमने ये डिजाइन किया है, जो आपके बच्चों को और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, अर्ली एजुकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो अभी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शायद ऐसे भी है जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए नहीं है, कुछ टाइमिंग या ऐसे कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो हम उनके लिए अपने रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पर और एज ए पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई।
और हम स्पार्टन किड्स के अंडर स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी भी चलाते हैं, जिसमें हम वर्कशॉप करते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप, ऑफलाइन वर्कशॉप, वेबिनार और ये सब करते हैं, और एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज लेते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट लाइक गर्भ संस्कार एक्सपर्ट और पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड डॉक्टर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, इन सब को हम अप्रोच करके उनके साथ इंटरव्यू अरेंज करते हैं, और इस इंटरव्यू को हम यूट्यूब पर और एज ए पॉडकास्ट भी अपलोड करते हैं ऑन स्पॉटिफाई, जिससे कि आपकी पेरेंटिंग जर्नी इजी बन सके, जॉयफुल बन सके। सो सर, यू आर ऑन म्यूट। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा विश्वा, अगर बहुत सारे लोगों को शायद तक पता नहीं हो, बट हमारे जो फ्लैश कार्ड्स हैं उसको यूज करके हमारे काफी कस्टमर्स ने काफी अच्छी अच्छी चीजें अचीव की है। फ्लैश कार्ड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट कि जो आपके बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। इट हेल्प्स टू बिल्ड द न्यूरल कनेक्शन इन टू द माइंड ऑफ द ब्रेन। आपके बच्चे के माइंड में वो न्यूरल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए वो हेल्प करते हैं। और कंसेप्ट तो बच्चे सीखते ही है, बट कंसेप्ट से ज्यादा वो एक पैटर्न बनाता है कि जल्दी से कोई भी चीज देख के सुन के किस तरह से वो ग्रास्प कर पाए और उसको अपनी लर्निंग में फास्ट लर्नर जो बोलते हैं, वो फ्लैश कार्ड के यूज की वजह से बहुत सारे बच्चे फास्ट लर्नर्स बनते हैं। एंड उसका हमारे पास सिर्फ यही नहीं है कि हम ये बता रहे हैं, बट हमारे कुछ कस्टमर्स ने फ्लैश कार्ड्स यूज करके बहुत ही छोटी उम्र में सिर्फ हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो जिनके बच्चे 6 महीने के हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे 1 साल 2 साल के हैं, और उन बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ चीजों को सीखने के लिए, फास्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए, राइट। सो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस स्टडीज हैं जिसमें फ्लैश कार्ड का यूज करके बच्चे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें कर पाते हैं और उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी को, उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो कैपेबिलिटी को वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। सो या दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारा हम ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इट इज जस्ट नॉट अ फ्लैश कार्ड, बट इट इज दी फ्लैश कार्ड की जो प्रोडक्ट आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा आपके बच्चों को डेवलप करने के लिए। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे विश्वा ने ऑलरेडी बताया, स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी वी हैव अ विजन कि हम हमारे हर एक कस्टमर को, सिर्फ कस्टमर को ही नहीं, जो कोई भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उन सबको हम ये देना चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारी प्रोडक्ट ही यूज ना करें स्पार्टन किड्स की, बट वो हमारे साथ कनेक्टेड हो, फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड हो और अपनी पेरेंटिंग जर्नी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, right? And that's why we have started this concept named as a Spartan Parenting Academy, और जिसका एक इनिशिएटिव है कि हम इस तरह के वर्कशॉप लेके आते हैं जिसमें आप लोग अपना कुछ भी जो चैलेंजेस है वो आप शेयर कर सकते हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो आज का ये वर्कशॉप उसी की देन है, वो ही हमारा इनिशिएटिव की देन है कि आप लोग यहाँ पे, हम सब यहाँ पे मिले हैं और हमारे पेरेंटिंग एक्सपर्ट जो है वो बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल इज टू कि अगर आप लोग हमारे साथ, ओके, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइम अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। ये वर्कशॉप हर 15 दिन या 1 महीने में हम एक बार करते हैं। अगर आप पहली बार इस वर्कशॉप में आए हैं तो प्लीज राइट इन टू द चैट बॉक्स मी, या यू कैन राइट मी अगर आप पहली बार इस वर्कशॉप में ज्वाइन हुए हैं। यस, yes, Rakshit ji. Okay, wonderful. Then I would like to suggest you that we have a Facebook group कि जिसमें हम सारी अपडेट्स डालते हैं, हमारे जो भी वर्कशॉप्स हैं, हमारे जो भी पॉडकास्ट है, हम जो कुछ भी हम रिलीज करते हैं आपकी पेरेंटिंग जर्नी को अच्छा बनाने के लिए, एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। ओके, तो उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कीजिए। हमारी टीम ने अभी अभी यहाँ पे वो चैट बॉक्स के अंदर वो लिंक भेजी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिले। यस, तो प्लीज बी कनेक्टेड विद अस, बी कनेक्टेड विद स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी, एंड आपकी पेरेंटिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जा सकते हैं। ओके, सो विद दिस विश्वा, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग, शेयर एनीथिंग अबाउट द नवरात्रि, या फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं? विश्वा, यू आर ऑन म्यूट। विश्वा, आप म्यूट पे है। नवरात्रि का इतना एक्साइटमेंट है कि आपको पता नहीं है कि आप म्यूट पे और बोले जा रहे हैं। I यस, will give one tip to all the parents. आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रहने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी
इसके लिए एक पेन और डायरी लेकर बैठे या कुछ नोट डाउन करिए, जिससे कि जो आप नोट्स बना सके खुद के, और आपको वो फ्यूचर में भी हेल्प करे, और वर्थ इट रहेगा ये वर्कशॉप के लिए आपका ये मेहनत। यस यस, वंडरफुल। एंड या हर एक वर्कशॉप के लिए हम जो कोई भी चीजें लेके आते हैं, हमारे पेरेंटिंग एक्सपर्ट जो कोई भी चीजें लेके आते हैं, उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग अपना पार्टिसिपेशन करें, ताकि जितना अच्छा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छा आप लेके जाएंगे। एक चीज में अभी तक मैंने जो लर्न की है इन सारे वर्कशॉप से, बहुत सारे वर्कशॉप हमने किए हैं, कि जो पार्टिसिपेंट्स एक्टिव रहते हैं, जो हमें जवाब देते हैं, जो जो कोई भी एक्टिविटीज जो है वो करते हैं, वो सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ रेगुलर कनेक्टेड रहते हैं, तो उनके फीडबैक्स हमें मिलते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स एक्टिव रहते हैं वो अच्छा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट दिस नॉलेज, देन बी एक्टिव इनटू दिस सेशन। Yes, with this, I suggest I would like to introduce our parenting mentor, हमारे जो है, she is an educator, and उनको बच्चों के साथ तकरीबन 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को हैंडल करने का। शी इज इनटू प्री स्कूल सेगमेंट एंड शी इज अ डायरेक्टर ऑफ एम्पावर्ड माइंड इंडिया सॉल्यूशंस एंड फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द प्री स्कूल्स। और ऐसी वैसी प्री स्कूल नहीं, ऐसी प्री स्कूल को जिसको अवार्ड्स मिले हैं। ओके, टॉप प्रॉमिसिंग प्री स्कूल के अवार्ड वो जीत चुकी है प्री स्कूल, एज वेल एज बेस्ट प्री स्कूल इंटरेक्टिव एंड इनोवेटिव करिकुलम के अवार्ड्स वो जीत चुके हैं। ऐसी जो प्री स्कूल का कंसेप्ट जो है जिन्होंने बनाया, जो उसके फाउंडर है एंड डायरेक्टर है, वो नन अदर देन मिस अनीता गुप्ता इज आवर पेरेंटिंग मेंटर टुडे। और वो हमारे साथ शेयर करेंगी कि बच्चों के जो चैलेंजेस है उसकी एनर्जी को हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। यस अनीता जी, वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। Thank you so much, everyone. Thank you so much for that wonderful introduction, Kalpeshi. यस, And यू आर लुकिंग वेरी वेरी गॉर्जियस मैम। मतलब हर एक हर एक एंगल लगता है कि नवरात्रि के लिए फुल टू रेडी है आप। yes, full to ready. Yes, Navratri fever is on for everyone. And thank you so much for your compliment as well. Yeah, thank you. So, hello, super parents. First of all, many happy Navratri to everyone. My wishes, my blessings also. And हाँ, हमारी माता जी की ब्लेसिंग हम सब पे, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे बनी रहे। उसी के साथ आज का वर्कशॉप हम स्टार्ट करेंगे। So before we start our workshop today, as it is Navratri time, why don't we switch on our camera and do one nice pose? एक कुछ भी एक pose हो जाए नवरात्रि का, a simple where everyone can do it. Okay, I will not make it very hard for anyone. So very simple pose जहाँ पे हम सब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे Okay, जैसे ताली बजा सकते हैं नवरात्रि में, सिर्फ गरबा ताली गरबा बजा ली, यस, राइट और लेफ्ट ताली, अप एंड डाउन ताली हो गई। दिस इज द बेस्ट स्टेप फॉर नवरात्रि। यस, so Yes. I would like everyone to switch on your cameras, so I also can see each and every beautiful, wonderful mothers, fathers, children, everyone. Bhumika ji Yes. showing her complete darbar of Navratri. Thank you so much, Yes. Bhumika ji, for giving us that opportunity to take the darshan of Ma Durga. Yes, yes. And please, other Kasturi ji, and I have one more Bhumika ji, Rakshit ji, Shweta ji, Prachi ji, Niyanta ji. Please switch on your cameras so we can have one quick pose for Navratri, and we'll capture that moment as well. We'll capture that moment and we will also share that screenshot into our group also after this session. Yeah, it will be a memory for everyone. Yes, yes, yes. Thank you, Kasturi ji. Thank you very much, everyone. Yeah. Yeah. So can we clap towards left? For my left, it will be towards your right, maybe. Okay. Left, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Downwards, 1, 2, 3. And upwards, 1, 2, 3. Can we do it again? Yeah. To the left. Yes, yes. to the left, 1, 2, 3. To the right, 1, 2, 3. Towards down, 1, 2, 3. And towards up, 1, 2, 3. And namaste to everyone. Thank you.
Thank you so much for your cooperation. So today's workshop, as starting में ही हमारे सर कल्पेश जी ने कहा, नवरात्रि is again ऊर्जा, energy. Yes, and everyone has their own energy. We all adults as mother, father, caretakers, everyone, and children also have their energy. But the thing is that how do we channelize and give that proper part to that energy? That is what today's learning, today's workshop is about. Anger is not a harm emotion. It is again an emotion which has to be channelized properly. Like we have happiness, we have fear, we have excitement, all other emotions are there. Same like that, anger is also emotion. Yes? Do we all agree with that? If you all agree, please write in the chat box agree or A. Yes. Thank you so much. Yes, so this is also emotion. We take it as ये just एक गुस्सा है, बच्चे का स्वभाव या किसी एडल्ट का स्वभाव ऐसे गुस्से वाला हो गया है. But how and why? Okay, that is what we are trying to understand from this workshop. So as at the start it is mentioned, you can take down your pencil, pen or notebook if you have anything to write it. Okay, and later on you can go back and look into that and it will be really helpful for you. So let's start our workshop. Let's dive into our workshop for today. Is it visible? My screen is visible for everyone? Yes, Your screen is visible, ma'am, but the presentation mode is not visible. It is a PPT mode is visible. 1 second. Okay, once again, I would like to, once again, I would like to inform to all the parents and all the participants, if any of your friend is not able to join this session, please let us know. Due to some technical issues, we are not able to, admit everyone at a time. So, अगर ऐसा कुछ है तो हमारी team backend से उसको admit करेगी. So please let us know into the chat box. Personal chat में आप share कर सकते हैं host के साथ या हमारे किसी Okay, thank you very much. Yes. Yeah. So there are some technical issues. So please, parents, please cooperate with that. Yeah. So the first segment of today's workshop is co-parenting communication. So we'll communicate about it. So every parent here should be energetic, should involve themselves, should participate for this. Okay, this segment. I would request everyone to participate for this segment. So first is when your child want to play, but you are busy in work. So how do you handle this situation? Any one parent can unmute and say about something about it. If you are busy, आप busy हैं अपने काम में, अपने ऑफिस के काम में, घर के काम में या कोई भी अदर दूसरे काम में आप busy हैं, but still your child wants to play with you. How do you handle that situation? Is there any inputs you want to you like to put in? Okay, so I would suggest you, in case none of the parents are coming up because of any reason, because of shy or because they don't want to share something. I don't know. Yeah. Hi, ma'am. Yes. Hello. Yes, ma'am. So when we are busy, but the child wants to play, we can encourage him to play on her own independence and to give little amount of attention to her. Maybe like puzzle solving or squeezing the ball, picking up the ball or other. Teaching the child to play independently and also giving our little of attention. So that way we can involve our child and we can if she complete one puzzle, yeah, good, you do one more. So it works both the way for us also and for the child also. It's a two-way thing.
Yeah, very good, very good. Thank you so much, Kasturi ji. That's a well answer for the situation. अगर हम भी बिजी हैं और बच्चा स्टिल हमारे साथ खेलना चाहता है, तो ओनली देयर आर 2-3 ways how to engage child, and simultaneously we can also concentrate on our work. We can give a breakout time also for us, also for the child also. हम हमारे काम से एक ब्रेकआउट लेके बच्चे के पे भी ध्यान दे सकते हैं और बच्चा भी हमसे कम्युनिकेट कर सकता है. एंड एज कस्तूरी जी mentioned here, independent play. In our iWatch, we can engage child in independent play, like some flashcards, some pack puzzle, some blocks or something, where child is engaged doing something within our eye reach. इस तरीके से बच्चा भी अपने काम में और अपने प्ले में बिजी है, एंगेज है, और we can also concentrate on our work. Yeah, in between we can encourage child by saying some praising words. Very good, amazing, you can do it still more better, you are doing it wonderfully, and you are becoming slowly independent also. The way the encouragement and the independency the child will gain, it is at the next level, isn't it? When jab bacha kuch bhi, a small thing also, when a child doing and reaching the goal by himself or herself, the self-esteem, the independency, the way the child present it will be a really very different. आप खुद ही अपनी इस सिचुएशन को अपने ऊपर लेके सोचिए, जब हम कोई भी चीज खुद से कर लेते हैं, our way of expression, our way of presentation will be completely changed. We feel, yeah, I did it myself. Yes, without or minimum help by other adult or surrounding people. Yes, so उस तरीके से बच्चे में एक इंडिपेंडेंसी आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी, प्लस बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी एक सब स्किल है, वो भी सीखता है, isn't it? जब बच्चा खुद से काम करने की कोशिश करता है इंडिपेंडेंटली, they will learn by themselves, they'll make some mistakes also and they'll correct themselves as well. It is self-correcting, self-learning methodology, isn't it? So जब बच्चा अपने आप से कुछ करने की कोशिश करता है, the learning is even more and the independency can be achieved. Do you all agree with me? Yes. Parents, in case if you agree, you can type in the chat box agree or A. Hello, ma'am. Can I say something? Yeah, sure. Hello, ma'am. Like जैसे हम चाहते हैं कि वो थोड़ा independent हो. हाँ, एक मिनट. Now, just for example, the practical example. Now, मेरे लिए अभी busy वक्त वो है जब मैं ये session attend कर रहा हूँ, and I need to be very attentive when I'm trying to attend your session. And this is the time he finds that पापा जो है कोने में बैठ के अपना कुछ काम कर रहे हैं, and he अभी आके मेरे साथ एक चिपक गया है, और now he wants to play with me. Yes. Now, ये ऐसे वो समय है जहाँ पे आप मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं ये काम छोड़ के मैं उसको किसी चीज में बिजी करने के लिए तैयार हो जाऊं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार. इन चीजों से इस पे थोड़ा इरिटेशन और इसमें गुस्सा ये आता है जब मैं उसको अटेंशन वो नहीं दे पा रहा हूँ जो वो चाह रहा है मुझसे उस वक्त. Yes, sir. जी हाँ. या आप उस समय पे इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सुरेश जी, आप बच्चे को उसके एज लेवल के हिसाब से कुछ स्क्रिबलिंग बुक, ड्राइंग बुक, समथिंग इन बिटवीन, देयर शुड बी सम वैलिडेशन आल्सो. The child should feel that, yeah, I am doing something and my parent, my father or mother is validating what I am doing also. So that way it becomes little easy for you also and for child also to handle and settle down for that situation. It is again age appropriate toys, instruments, age appropriate teaching aids has to be given to the child. See, कुछ भी चीज अगर बच्चे के लेवल के हिसाब से आप एकदम इजी भी दे देंगे तो बच्चा जल्दी से फिनिश करके भी आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है. There should be some challenge, minimum challenge, where the child also feel, yeah, it is a little challenging also and it is interesting as well. So that way you have to keep in mind
what kind of teaching material, what kind of toys, what kind of materials you are giving to your child. That has to be taken care. Right, ma'am. Yeah. So that way the child also will be engaged. Yes. And you are also in between, you have to validate what is his accomplishment, what is his achievement. So right through from the start till the end, we cannot expect child to get engaged and busy with one activity. In between, there should be a breakup and there should be a validation for his activity, whatever he is achieving the goal. So that way he will be consistent and doing his engagement as well. Got it, ma'am. Yeah. Thank you so much. So let's move on to the next one. Your child wants to play, but you have to go home. It happens, generally it happens, जब हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं, maybe it may be a garden or it may be a completely a place where there are many things tempting the child. Okay. Yeah, the child still wants to play because child doesn't understand time factor. For us, time factor works. This is the time we have to go home. This is the time we have to eat. This is the time it is to do our homework and all those things. We work as per the clock, but child cannot work as per the clock. Yeah. So how do we manage that situation? Any parent, anybody can unmute and just give some inputs about it. No parents. Okay. I would say अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं? हमारा मेन एम होता है कि बस अब जाना है तो जाना ही है. वी आर स्टिक टू आवर वर्ड्स, चाइल्ड स्टिक टू हिज और हर वर्ड्स कि नहीं मुझे थोड़ा और खेलना है या मुझे थोड़ा और मतलब टाइम बिताना है यहाँ पे. करेक्ट? This is what leads to the conversation. It escalates the situation. How do we work? Before the time comes when we have to go home or we have to go back to our work, we have to give some heads up to our children. Okay, now it's time. Before 10 minutes, 15 minutes only, you should start that heads up. Now after 2 minutes, 3 minutes, we have to pack up. It's time to go home. Okay, we have to set clear expectation. Now you finish this, accomplish that task, you can finish this, whatever child is engaged with, you finish this, then it's time to go home. Okay, then that is where the child gets to know, yeah, after 2-3 repetition, we have to go home, pack up the things what we are engaged at this point of time, and after this I have to go home, I have to go back to work. Whatever the next task is, whatever the next approach is, that we have to decide and we have to go further it. Yes, this is how it becomes little easy and acceptable for the child. Yeah. So otherwise what happens, the child is sticking to one word, we are sticking to one word. No, this is what the thing is, this is what I expect to you, I expect from you, and you have to do this. Then it becomes a kind of where the child feel, yeah, I still want to do this, and this will lead to again kind of aggression or again kind of frustration for both the side, for the parent also, for the child also. To handle this situation better, this is the way we can work on it. Yeah. So let's go for the next one. Next situation for us is you are doing cooking. We are busy in cooking, but child is disturbing you. How do you handle this? What is the help you can take from your child? How do you take care of this situation? How do you take care of this complete scenario? Yes, anyone can share who would like to share their experience. I'm busy completely. Rakshit ji has shared in the chat box that let me complete my work, then I'll come to you. That's what the response he usually gives. Yeah. Okay. I generally give him thoda atta and ask him to make a mold dough of it. Or fantastic. If I'm like just now when I'm speaking to you, he has forced me to make a paneer roll for him. So I'm watching this webinar and also making a paneer roll. Now he has come to disturb me.
So I gave him little atta and little water. So he's busy making the dough now. Okay, okay, Yes, fantastic. and we also got some of the great responses into the chat box from Veena ji, Kasturi ji, and yeah, one of the important aspects, one of the important thing I understood is if parent can identify the one thing that interests the child, that itself an achievement. अगर आपको वो पता चल गया कि आपके बच्चे को क्या मजा आ रहा है, जैसे सुरेश जी ने अभी शेयर किया, ओके, तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते किसी ऐसी चीज में जबकि वो अपने आप को अपने आप ही सीखे और खुद से वो लर्न करे. And meanwhile you can complete your work. Am I right, ma'am? Yes, yes, sir. So in any chores and all, see, child also voluntarily, they want to get engaged in that. So why don't we engage our children in that process? Okay, as the cooking here, the situation is cooking. We can involve, as Suresh ji, he has mentioned here. Sir mentioned that he gives him a play-doh, thoda atta de dete, and you make ball out of it. You make some pattern out of it. You make some rolls out of it, or something like that. That way, here the learning is also happening. There are some set of instruction sir will be giving to the child. You make ball, you make pattern, you make some sticks out of it and all. And that is where the child is understanding this is what I can make from it. Yeah. And just imagine about the fine and gross motor skills are also developing. Not only the conversation, but again, it is a skills also developing. Yes. So in any of the chores, you can involve child as per his or her age level. In this case, you can ask child to help me give this. I want two tomatoes, one potato, one full glass of a half glass of water or something. Here, the child can understand maths also. When you say two things, two tomato, the child is speaking two or not. Either it can be 3 or 1. Child understand that value of the number as well. Yeah. When you ask child to give me a half glass of water, so you can also see that whether the child is able to give that half glass, full glass, or 3/4 or 1/4 glass. So many math skills, numeracy skills are also developing by these chores. Isn't it? So that way, in any of the engagement when we are doing, you can take the help of the child. And end of that chores, when you finish that chores, that is an achievement for the child doing all those help to you. Yes, they will feel validated. They will feel real happy that they helped you. Rather taking it as disturbance, or rather taking it, you are disturbing me, please go back and do your this work and that work. You can involve child in that process. There, the child will be happy, and we as a parent, we are even more happy. Yes. So involve child in any of the chores, whatever you are doing, as per their age level. Yeah. So it's there was some conversation and there was some situation where we can take help of the child, and we can solve the situation there and there itself only, rather taking to the next level. Yes. Now let us understand what are the causes of aggression. What are the causes of aggression? There are many causes. As a toddler, as a child, they are still learning so many things. Their vocabulary has developed, or they are still learning the vocabulary. Yeah. And they, as a child, they are still evaluating the things, how to express, how to validate, and how to communicate their feelings, their demands, their wishes. Okay, so one of the major cause now, as per the era, single parent pressure. Many of the parents are living as a single parent now. They have their workload, they have their family load, they have their professional load, they have their children load, they have their emotional load. So many loads they are taking as a single parents. Yeah. So that is also one of the major cause of aggression in children and parent as well. So as we are overloaded because of so many commitments what we have, we are not able to balance between our workload and our
personal and family life. Yeah. So this is the main and major cause of nowadays as for aggression. When a mother, a single mother is there, and she has to handle each and everything, irrespective of taking care of children, irrespective of her professional life, social life, and everything. Somewhere, even mother and or father, they also need a break. They also need a refreshment. They also need some kind of enjoyment, self-meditation, where they can handle the things properly, where they can analyze the things properly. And their outcome, their ability should not be hampered. Okay, it should be accomplished by doing all those things. And we as a parent, a single parent also, we cannot go and tell our children, as a single person, as a single mother or father, I am there to take care of you. Please, you don't do this. Please, you don't do that. Please, you don't deal with these things by yourself. That is going to be a wrong approach from our end. Yeah, child is child. Yes, they don't know the exact situation, a single or a parent as a couple. Okay, they come up with their situation, their conversation, and their problems to us, and we should be there, we should be present there to solve and listen to them. So this is the major cause of nowadays for aggression in children. Next, we have one report from UNICEF. As we all know, wow, what is the full form of UNICEF? We all know, right? It is United Nations International Children Emergency Fund. So they have one report and facts about it. Among 4 children, 3 children are under pressure, under aggression. They are not attended properly by parents or caretaker or by schools as well. Okay, we don't give them that kind of validation, their emotions. We don't give them that kind of validation, that kind of we sometimes, I can say not sometimes, although most of the times we are not present to listen to them, what is happening in their life. Yeah, so that is a fact from UNICEF. Among 4 children, 3 children are under pressure, under aggression, going through a lot of depression as well, where they are nobody to hear them, they are nobody to solve their problems. So this is a fact from UNICEF as well. We don't want to go into that situation. So this is the time where we have to take a call to give our children the happier and better life. Yeah, we don't want our children to fall under that kind of database. Yes. Yes, it is almost a critical situation, because if 3 out of 4 child are feeling pressurized, then Yeah. it means 75% of the children into this world are under pressure, and Under that is pressure. that is due to some mistakes, some unknowing acts of the parents. That's where they feel the pressure is all about, right? Yes. So, and let me tell you, ma'am, many of the times I feel that it is not about children, it is mostly about the parents. We need to change ourselves, and that's why such kind of session are giving us insight कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं. Actually correct, very much true and very much correct. जो हमारे पास होगा वही हम देंगे. Correct. Yes. Yes. Exactly. जो हमारे पास, if I am happy, I can spread the happiness around me. Yes. If I am unhappy, you can observe, you can see, you can radiate the unhappiness around me with my gesture, with my posture, with my actions and all those. So we as a parent, we should be ourselves happy, satisfied, and then that is how we can handle our situation, our children in a better way. Yeah. Now next comes unhappy parents. Most of the marital life has become so demanding and I can say so unsatisfied and unhappy.
it is very obvious as a parents, we might have sometimes some conversation also, some heated conversation of on any topic or any incident on any scenario. But what do we do exactly? जनरली हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, जो हमें बोलना होता है एक दूसरे को, वी डू दैट. ओके, irrespective the child is around us, we don't actually observe that. But when we have to settle down, in case we have to settle down as a parent, what is that we are doing? We do it in a privacy. Yeah, it is generally that is what happens. Yeah, there where the child is not there, there we settle down. Yeah, ये situation बहुत ही important and जरूरी है as a parent. When we do something, when the situation is escalated because of any conversation or because of any situation, we have to give us a role model for our children. जो settling time है वो भी हम see, it can be possible as a different, complete different personality. It is very obvious. Sometimes it is bound to happen. It might happen also. There are some situation where we have to do a little argument, or we are not satisfied with the other person's opinion or focus or any suggestion or something. But उस चीज को हम जब बच्चों के सामने हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, हम कंट्रोवर्सी हम कॉन्वर्सेशन ऐसा कर सकते हैं, then why can't we settle down also in front of our children? Yes, that is where the child understand it is okay, it is fine to express our thoughts, okay, express our views, but end of it, this is how we have to solve it also. Yes, that is where the child understands the solving of that conversation as well. Yes, as a parent, we generally don't do that. Yeah, हमारी conversation हुई, हमारा कोई भी argument हुआ, चलो ठीक है हुआ, उसके बाद हम कुछ समय के लिए उस चीज को उस situation को expand करके we end up doing settlement in a way where the child presence is not there. Yeah. So why don't we do that कि हाँ, अगर ये situation ऐसी हुई है, and what is the learning what we are giving to our children, we can just leave the conversation just like that and this is what happening, right? Why can't we do something like that? हाँ, conversation हुआ, there is a argument जो हुआ, उसका end result क्या है? End result is again settlement. Yeah, why can't we do that? We have to do that also. कि एक चीज जो हमें एक नेक्स्ट लेवल के आर्ग्यूमेंट पे लेके गई, बट एंड ऑफ इट वी कैन स्टिल सेटल डाउन द थिंग्स वेरी इजीली, सिंपल मैनर एंड सिंपल वे. यस, सो दैट इज वेयर द चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल्सो कि कोई भी कॉन्वर्जेशन या कोई भी अनअवॉइडेबल रीजन से कुछ कंट्रोवर्सी हो भी जाती है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो भी जाता है, स्टिल there are certain strategies, there are certain points where we can settle down the things. Yeah, so we as a parent, we have to do that role model that yeah, it is that what is happening, but there is a end of it, we have to settle down as well. Can we all do that as parent? It is our duty and responsibility to give that kind of role model to our children. Yes? Can we all agree for this, parents? Yeah, wonderful. This is a moment of realization that we actually, keep the loop open. We are not closing the loop, and that's where exactly the misunderstanding happens with the child, and they, उसको ये लगता है कि भाई ये ठीक है. Right? Yes. So yes. when we fight in front of children, if we cannot, stop that, then we also need to settle down in front of children. That is something, bulb on moment for me. Yes. So that loop has to be closed as well. Yeah. And understand one thing, parent, there are no bad children. There is no bad boy. There is no bad boy or girl, right? There is a bad behavior. A person is not bad. A behavior can be switched to other behavior. That's it.
Okay, so there is we should stop labeling our children bad boy or bad girl. Okay, it is a bad behavior. It's not a bad behavior. Also, the behavior can be changed or switched to other behavior. Yeah. Okay, let's go to the next one. Stressful life events. So this is also one of the cause of aggression. See, there are some unavoidable situation or things which might happen during lifetime. Can be a situation where as a parent we might lose our job also. That is a stress for us, isn't it? Or unknowingly something has happened our home, which is not very good. We are very unhappy. It can be anything. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस और कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पे हमें कुछ लॉस हो गया, या कोई घर में किसी से मतलब कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई, दे एंड अप टेकिंग द मेजर डिसीजंस और मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स लाइक सेपरेशन और एनीथिंग, if the joint family or something like that. So that is again a stress for parent, and unknowingly child is also grabbing, taking all those energy also. Do we ever think about that? We don't think about that. We only think about, as an adult, we think about what is the energy we are taking inside. But as the child is also around there, child is also taking that energy inside. This is what happened. This is how this has happened. We start talking about all those things on and off, and child is also around us, and child is also observing all those energy. Yeah, this is why my parent is suffering like this. This is what the thing has happened. This is where this is where my family situation has become a little difficult for me or my parent or something like that. It is again a kind of stress where we cannot avoid. It is completely unavoidable. But yes, communicating with child, or in case the child is not required to know all those things, we can still avoid that, isn't it? If the child is very young and the child is not needed to listen or be a part of these kind of talks or something, we can still do it, isn't it? We can still do it. Only the thing, वो हमारी consciousness होनी चाहिए. We should be little alert about it कि या इस चीज को बच्चे को हम दूर रखें तो ही बेहतर होगा. Because unknowingly child is also observing all those situation, all those energy in him. Yes. तो stressful stressful जो भी एक इवेंट हो जाता है, या कोई सिन हो जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, या अगर इन केस ऐसा पॉसिबल है कि हम बच्चे को जाके इस चीज के बारे में एज पर हिज एज लेवल बता सके, दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. Will you please do this thing for me? Will you please come to this level, or will you please be around that surrounding, so that we will be at a situation to handle the situation properly, and you as well. Yes. तो उस चीज को एक कम्युनिकेट करके भी अगर हम बता सकते हैं तो बताने की कोशिश जरूर करनी चाहिए. अगर हम नहीं बता सकते हैं बच्चे के एज के हिसाब से, ट्राई एंड फ्रॉम योर एंड मैक्सिमम ट्राई शुड बी देयर कि उस बच्चे उस सिचुएशन में उस बच्चे की प्रेजेंस अगर जरूरी नहीं है तो एज मच एज पॉसिबल वी कैन अवॉइड दैट प्रेजेंस. या ओके. I think it has become too high for every parent and everyone here. So we have one small activity for every one of us. So let's get energized. And can you all see the picture on the screen? Yes, can you all see the picture on the screen? There is one teddy. I think it's a teddy or a it's teddy only. It's flying in jet. Okay, it's taking us somewhere in the sky. Yeah. So we have to find. There are some. Actually, हम जब छोटे थे तो हम ये एक्टिविटी किया करते थे. Yes, you all remember?
But yes. this activity is actually irrespective of age. हम सबको ये activities पसंद आती है. अगर कुछ find the difference हो तो we try to look into that. क्या है. So parents, be active and find the difference. You can unmute yourself. You can say or write in the chat box if you found some differences. Yes, So you answers in the chat box. okay? One star is missing, Niyantaji says. Cloud मैडम, on the right. या मैडम हमारे पार्टिसिपेंट इतने ज्यादा एक्टिव है कि आप जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे उससे पहले ही उसके आंसर आने लगे. Correct. So nice. And I think all the answers we got, right? I'm just Yes. checking the chat box now. Yes. All the answers, yeah. Star, cloud, 1 star down at missing. Yes. So let's see. Yes, you spotted correct. So एक एरोप्लेन का एक विंग मिसिंग है, स्टार मिसिंग है, क्लाउड मिसिंग था, और ये हाथ के पॉस मिसिंग थे, एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड, इज दैट स्कार्फ पे स्टार्स. Yeah. Great. Very good. A big clap for all the parents here. Big clap for all the parents. And thank you so much for your activeness and participating in the activity. Yeah, I would like to interrupt you, ma'am. First of all, once sure. again, I would like to announce that we are facing some of the technical issues, and due to that, Zoom के कुछ updates की वजह से सारे जो लोग हैं participants automatically अंदर नहीं आ पा रहे हैं, हमें उसको manually admit करना पड़ रहा है. So if any of your friends and colleagues who is not able to join this session, please let us know into the chat box. हम back end से उसको करेंगे कुछ भी हो तो. Okay, first thing. And second thing is one more important announcement. One of the suggestion for the workshop topic we got from all of you is autism. Autism के बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारी चीजों को मतलब ये लगता है कि भाई autism is something कि भाई एक बार हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, right? And that's why we have designed a workshop which will be on 25th of November. Okay, 25th of November, and the workshop is known as the Art of Autism. Okay, so we will learn the art of autism from a parenting expert. Okay, parenting mentor से हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, और autism exactly क्या है उसके बारे में हम उस workshop के अंदर हम बहुत सारी चीजों को understand करेंगे. So yeah, I would request all of you to register for that workshop also. उसकी जो link है वो हमारी team आपको share कर देगी, and yeah, we will be sharing that link into the Facebook group also. Yeah, madam, you can continue, and sorry to interrupt you. No, that's absolutely fine. Yes. So let's go to the next segment of today's workshop. Now comes the best part of it, deal with the aggression. How do we deal with it? Any inputs or any suggestions from parents? How do you deal with it? In case of that kind of situation where you are unable to do something, you are still thinking about what we are supposed to do. I'm sure as a parent, sabhi ne kuch na kuch situation face to zarur kari hi hogi, correct? Yes, be calm and face it. Yes, correct. That's the best and the most effective way to deal with the situation. Be calm and validate the 1 second. It is the most effective one, ma'am, but it is not easy one, I must say. Yeah, I totally understand and agree with you. It's not easy, and we parent don't want any easy task also. I can say that. Yes, as a parent, we don't want to take any easy task. In our basket, there are no easy tasks for us, right? So our baskets are full of challenges and difficult tasks only. Yeah, and that makes us strong, and that makes us more super parent as well. Yeah. Okay, let's go to the next one now. Deal with the situation, deal with the aggression. How do we deal with the aggression? Be respectful. This is the first part of being when the child and when the situation is something where
in case the child is upset, in case the child has something to share and still we are not able to do something, at least we have to be respectful towards the child, towards the situation, towards the scene. Yeah. How do we be respectful? How can we be respectful? Any suggestion for that or any inputs? How can we show we are respectful for our children? Can I share something, ma'am? Yes, sure, sir. Okay. So one of the thing I learn is we usually take our children as a granted. मतलब हम उसको ना respect ज़्यादा नहीं देते because we feel they are not knowing much thing. उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है. Still child. क्या Yeah, पता है? still child. So if we can just build this habit to see them as a adult one, as a grown one, then we might change our behavior and we might be more respectful to them, more respectful to their opinion, more respectful to their choices and all these things. That's what my understanding is. And yeah, you can share whatever. Yeah. Actually, that is also a good way to show our respect. Okay. Yeah, I can completely understand that child is still child. Yes, you are also correct. And child is also correct as being child. But as an adult or as a parent, do you think the maturity or senses or anything develops as per the age only? Do you think like that? No. Any person who can handle the situation properly, who can act properly, who can analyze the situation properly, that person is called mature person. Yeah. It's not only with the age or with the numbers we are mature, we are grown up, we are adult. Yeah. It is how we take the things, how we be respectful towards the situation, how we validate the other person's opinion also. That is where, and we take the correct action. That is where we get respectful also, and we will become more mature. Okay. Sometimes you must have heard like इतना छोटा बच्चा है लेकिन इतनी अच्छी बात करी, मुझे ही ये चीज नहीं पता थी. अगर ऐसा मुझे पता होता तो I would have handled it more properly, more sensibly. Yes, we feel sometimes, and child comes up with that kind of answers also. Mama, Papa, आप ऐसे करते तो शायद ये चीज और अच्छी होती. Yes. So it is again how they have experienced, how they have analyzed the situation, and how their thought process had worked. Yeah, that way the child should feel respectful. In the sense, we have to respect the child's opinion as well, child view as well. Yeah, it can be yes, it is understandable. It can be not exactly related as per the child understanding. Child may come up with any kind of answer, but we have to show that respect to the child. Yes, you are doing you grab the you have understood this situation like this, and this is what your outcome. I really respect, I really honor your answer, and thank you for giving me this suggestion or a view or anything, whatever the way he has put up in front of you. Yeah, that way we can show respect to our children. So we should be respectful. Next come set clear expectation. This is very, very important. Today, as we are all there in this workshop today, let us take a pen and notepad and write down what are we doing from the morning till the evening. Okay, right from the morning when we get up. Okay, first what do? We touch our mobile generally. Okay, we see our messages, what is there, what is not there, and all those things, right? Yeah. Next, we might have to cook for our family. As father, we might have to get ready for our office. Okay. Next to that, we have set of things to do for the complete day, for the whole day. Yeah. So today, as parent, as caretaker of our children, today we will write everything what we are doing right from the morning till the evening, till the time we sleep. Okay. And after that, let us list down the things. What do we expect from our children to do? Do we expect our children as soon as they get up to touch their mobile?
see what are the messages, what are the things, what are the updates we have. We don't want our children to do that, but we are doing that. Yeah. So is it the expectation are matching? No, where the expectations are not matching. So let us make for ourselves what we are doing and what are our expectation of from our children. Okay. So today is your after this workshop, everyone's it is a task. I will not say task. It is a list what you are going to write down. Okay, because if I say task and something, it becomes no. Why should I should do any task? It becomes like that. Generally, it happens like that. Task means nobody wants to do. Yeah, it is a list what you have to make, then you will enjoy and you will do it also, right? So list down the things what I am doing from morning till evening, okay, and what I'm expecting from my child to do from morning till evening. So is it somewhere matching or not? Okay, so sometimes even we have to change our sets of habits. Okay, to change our child's habit or child's routine, we also have to change our habits sometimes. Okay, so the expectation when you write it down for ourselves, for our children, it becomes little easy for us and for our children also. And once you know what is need to be done, so you are more planned, you are more organized. And once we are more organized, we are more planned, the same way we will do it for our children also. They will also become more organized and more planned. Yes. So we will set a clear and realistic expectation from our children. This is what you are expected to do, and this is what I am expected to do. Yes. So things will become little more easy and simple, and the expectations are set. So it becomes easy to take the steps towards an action towards it. Yes. So this is what everyone's list to be ready for today. Okay. And it's not only to be ready, we have to work on it. Yeah. From today, after this workshop gets over, I don't want immediately you just list down the things. You enjoy your Navratri Dandiya wherever you want to go. After that, list down the things and see to your expectation and your expectation from your child. Yeah. So parents, are you all going to do this? Can you type in the chat box yes or no? If yes, yes. Yes, Be this honest. activity. Be honest to yourself. Okay, first you have to be honest to yourself. This activity will give a clarity to all the parents that what exactly the differences they have, what kind of expectations they are having, and what exactly they are doing. And it is really important because हम देखते हैं monkey see monkey do. So Yeah. they are actually copying whatever we are doing, and we are expecting something what we are not doing, and we ask them to do. Right? Yes. So this activity is very important for them for the same. Yeah. I want to share something with your permission, ma'am. Sorry, Vishwa, I did not get you. I want to share something with your permission. Yeah, please go ahead. Yes. हमारे एक जो एक्सपर्ट है उनकी वीडियोस में मैंने देखा था कि वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि पहले उनका जो किड है वो स्क्रीन टाइम ज्यादा लेता था, तो क्या है कि वो खुद मोबाइल और टीवी स्क्रीन से ज्यादा यूज करते थे। बाद में उन्होंने बुक रीड्स करना स्टार्ट किया। वो जब भी अपने किड के साथ होते हैं या ऐसा कुछ उन्हें लगता है तो वो बुक रीड करते हैं अपने फ्री टाइम में भी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस मार्क किया है कि उनका जो स्क्रीन टाइम है उनके किड का वो ऑटोमेटिकली कम हो गया है। Fantastic. That was a very nice example. एक और ट्रिक उन्होंने कही थी कि मेरा बच्चा जब बहुत स्क्रीन टाइम लेता था तब मैंने एक ट्रिक अपनाई थी। वो छोटे छोटे टोकन बनाते थे ऐसे 15 मिनट्स के, और वो 5 टोकन्स अपने बच्चे को देते थे, अपने किड को, और वो कहते थे कि जब भी उन्हें स्क्रीन टाइम चाहिए उस किड को, उनके बच्चे को, तो वो एक टोकन उसकी मम्मी को देता था, और तब सिर्फ 15 मिनट्स के लिए उसे स्क्रीन देखने को मिलता था।
इससे क्या है कि बच्चे के मन में भी ये रहेगा कि बस अभी 2 या 1 टोकन हमारे पास है तो हमें कम देखना है टीवी या कम स्क्रीन यूज करना है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा। बहुत ही बहुत, it is really very useful, Vishwa, and thanks for sharing. And this will really work for other parents also. Yes, it's a very nice trick, and it is how it is controlled way the child is allowed to allow for screen time also, and again it is controlled way also. Very nice, fantastic idea. So parents, this idea, this trick also can be implemented, okay, to control our screen time for our children. Okay, let's go for the next one, dealing with biological issue. Okay, here it's not only about child's behavior, aggression. There could be some biological, some milestones or some skills which are not developed, okay, for the child, that also can be issue for the child, okay, to show aggression or to be really unhappy with the situation and all. This kind of situation, as a parent, we have to find out immediately, as in when we feel there are some symptoms or there are some signs, and we really have to take the action towards it. In case some home remedy can work, then we have to work with the home remedy. In case not, we really have to take the consultancy from the specialist, child specialist or doctor, whichever it is, whichever way it possible. Okay, so that is also kind of a thing where the child is not able to express properly. It can be because of any internal things which is going on, which is not allowing child to express, which is not allowing child to as per the gesture also to express the way what he wants to do. We really have to work on it. In case something like that it comes into the picture, or some symptoms are visible for us, we really have to take the serious call for this. Yeah. So dear parents, I would see this age is very crucial. First thing is that they are still exploring, developing the vocabulary and all those. Some children, they develop vocabulary at a later stage also. Okay, so in that case, how to find out what is the child needs, and how to tell children how they can express their feelings, that becomes a little challenging, right? So let us not go too deep of that kind of situation, but yeah, you can give some flashcard, or you can give some corners or something like that, where it can be a happy corner, or the other corner can be unhappy corner. Let us not mention as a sad or sad corner or something. Less happy corner or something like that. Okay, so in case the child comes and shows some at a happy corner, he sits, or some gesture is visible from the child, that means child is happy. That means you have to make him understand this is the corner for this purpose. Okay, and when the child is around that corner, we have to understand that, yeah, I made the child understand this thing, and the child is around that corner, means child is giving me signal, child is showing me that I'm happy or unhappy. Okay, so in that case, flashcards, some color coding cards or something also can work. Okay, you can show red card, you can give him red card. You have to make him understand first. Red card means this is where you are feeling unhappy or you need some help. Okay, that is why you are showing red card. It can be other color coding cards, something like green or something. I'm okay, I'm calm, I'm happy, something like that. So that way, in case in other ways, if it is not working, at least this is the way the child can communicate, showing some signals, showing some cards, showing some flashcard. Child at least can communicate not verbally, non-verbally also, that what is his feeling and what is that he is looking for. Okay, so that way, any which ways the child is addressed accordingly. Okay, the first action from our end should be
The child should be addressed accordingly. If the child is happy, we have to address in that way. If child is unhappy, the child has to be addressed in that way. So any which ways, the validating the feelings वहां पे बहुत जरूरी है. तो अगर बच्चे में unfortunately there are some delays where the child is not able to express verbally or in a different way. So these color codes or these corners which has happy, unhappy corners and color coding red or green or something like that. That way child can still express his or her feeling. So accordingly, we can validate that feeling. Okay, parents, fine. Let's go for the next one. Time out discipline. This is again very, very important. When the child is unhappy for the certain situation or कोई भी scene के हिसाब से child happy है, we can give. See, we don't want child to get punished for any reasons. Okay, punishment will not work. Time out corners will work for the child. Okay, how do we work with the time out corner? We can say child, we can tell our children, this is where you are not able to you are still learning the process. So this is the time out thing. You have to be here for some time. Let the child analyze, understand what is the emotions going on through. क्या इमोशंस हो रहे हैं, क्या वो बच्चा करना चाहता है, कैसे करना चाहता है. लेट द चाइल्ड आल्सो अंडरस्टैंड फर्स्ट. For that, we can give time out corner, and time out corner also has to be safe. We have to see that the first priority is safety for the child. We cannot go and tell child कि उस जगह पे ही आपको रहना है. Now you are inside that और आप बाहर नहीं आ सकते हो. Something like that. That extreme level पे हमें नहीं जाना है. Okay. कहीं पे भी जहां पे भी आपके आई रीच के हिसाब से बच्चा रह सकता है, वैसा आप टाइम आउट डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा आपकी आई रीच में भी है. बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम where child is not able to understand the emotion, the child might do anything. The child might can harm himself also. We don't want all those things to happen. So it is very important कि बच्चा हमारी आई रीच के ही आसपास रहे और हम उसके ऊपर नजर भी मॉनिटर भी कर सकें और बच्चे को भी समझ में आए व्हाट आर द इमोशंस गोइंग थ्रू एंड हाउ टू एनालाइज दैट एंड ट्राई टू व्हाट वी कैन डू. वी ट्राई टू redirect the attention also of the child. कभी कभी होता है बच्चा एक छोटी सी चीज पे, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर या एक छोटी सी टॉय पे भी हाँ ऐसा हो जाता है. द सिचुएशन बिकम सो हीटेड अप कि अब ना वो बच्चा छोड़ रहा है ना ये बच्चा छोड़ रहा है. अब उस सिचुएशन को क्या करें? तो ऑन दैट सिचुएशन वी हैव टू give the choices to the child. Negotiation kind of things work very well. आप ये करिए, आपको ये चीज आपको आपका फ्रेंड आपके साथ शेयर कर सकता है ऐसे. तो इससे बच्चे में एक निगोशिएशन स्किल भी डेवलप होती है. Yes. So time out corner works very well when the child is still learning and understanding the emotions, what is going through, what is going to happen now, all those things. Okay. As we spoke about validating feelings. Yes. Be respectful, validate our children feeling and all. So this is again very, very important to validate our child's feeling, our child's emotions, what child has to share with us, what it can be something which is very, very kiddish also, but we cannot say that no, आपने ये चीज बोली लेकिन I will not take it at all. It is something which is very which is not at all connected. Okay, no, we cannot go and say children like that. We have to validate whatever effort they have put it in. Okay, बच्चे ने जो भी एफर्ट उस सिचुएशन को समझने में और इस थॉट प्रोसेस करने में और रिजल्ट लगाने में जो भी एफर्ट लगाया उसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है. दैट इज वेयर दे अंडरस्टैंड देयर फीलिंग वेरी वेल कि हाँ ये चीज मैंने करी है एंड दिस इज वेयर आई गॉट वैलिडेशन ऑल्सो फ्रॉम माई पेरेंट. Yes, so validate child's feeling
each and every feeling. It can be happiness. There are ways to show happiness. We laugh, we cheer, and all those. There are ways to show ways to show excitement. Like we laugh aloud or something, or we want to do some movements to show our excitement and all. So why can't we have something to show our anger also? It is not necessary कि किसी को harm करना ही या खुद को harm करना ही. It is a way to show our aggressive behavior. Yes, it can be any other way also. It can be it can be any other way in the sense, as I told you, red color flash card also, the child can show red color card flash card also, that I am unhappy now. Can you please validate my feeling? What am I going through? What I need and all those things. Yes. So validate child's feeling. Okay. Now it comes to show correct way to express. That is where we as a parent, we as a caretaker, we as an educator comes into picture. We have to show our children what is the way to express their feeling. बहुत सारी फीलिंग है, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन आती है, करेक्ट, लेकिन उस चीज को कैसे एक्सप्रेस करना है. इन केस चाइल्ड इज वर्बल, बच्चे को बोलना आता है, let it be few words only. Okay, you can associate one or two words for his aggression feeling and one or two words for happiness feeling also. अगर आप ये बोलते हो, अगर आपने ऐसा किया, that means you are happy or you are unhappy. Okay, we have to redirect, we have to show the path. What is the way we can express our feeling? How do we express our emotions? So that is where very important part comes as a parent, and very important part comes as an adult for children. Yeah. So we have to show them what is the way and how is that way workable, and how to express those feelings where the other person also can understand. Yeah. Hope children, hope parents, you all are getting all the things what we are talking about. Am I clear to everyone? Yes or no in the chat box, you can write it down. Are you with me? Are you there? Yes. Yes, we are getting an answer, ma'am. Yeah. I can see that. Yeah. Okay. Now the first, and as we spoke about it, staying calm and composed. Yes, it's very difficult. We spoke about it earlier also. It's very, very difficult. I understand, very challenging. But we as a parent, we have to take challenges. We have to analyze the situation and we have to stay calm. अगर बच्चे में गुस्सा आ रहा है, बच्चे को गुस्सा करने की ऐसी सिचुएशन बन रही है, और उसी सिचुएशन में हम भी उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, we yell at child, what is going to happen? Is there any result we can end up doing? Can we find any result out of it? No, we will not find any result out of it. We have to stay calm, come down to the child's level, try to understand what child is feeling, try to understand what is the emotion child wants to share. And that's how we have to give or show the path, show the expression, show the way. This is how the child you can do the things. Okay. Staying calm and composed is very, very important for parent. Yeah. Are you all there? Are you all understanding this? Staying calm is important. Yes, can you all type in the chat box? Yes or no? Staying calm is the prime most important thing where we can handle the situation in a better and fruitful way. Yeah? Yes. Veena says yes. Yes. Please, participants, are you there or not? Are you understanding or not? Please write down your answers or suggestions. Yes. Okay.
how children learn. As a parent, we play all the roles. Yes, we are caretaker, we are teacher, we become extraordinary friend for the child. We become guide for the child. We become a drawing teacher for the child. What and all we don't become, right? We as a parent, we play each and every role for our children. And the basic part of it, we have to become role model for children. As I told you earlier also, when we do any conversation, when we have a situation where the children are there around us, they are listening to us, they are observing us, they learn more. Remember one thing, बच्चा हमारे बोलने से नहीं, हमें देखने से ज्यादा सीखता है. जो बच्चा हमें देखता है, जैसा हम करते हैं, उस चीज से बच्चा ज्यादा सीखता है. यू टेल चिल्ड्रन 10 times, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. ओके, या चाइल्ड मे स्टिल डू द सेम, बट व्हेन यू डोंट डू दैट, व्हाट यू डोंट वांट द चाइल्ड टू डू, चाइल्ड विल अंडरस्टैंड दैट बेटर. या आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा. जो हम बच्चे को बोलना चाहते हैं, जो हम बच्चे से करवाना चाहते हैं, पहले हमें करना है. या जब हम खुद करते हैं, बच्चा देखता है, तो अपने आप धीरे धीरे वो भी करने लगता है. तो वी एज अ पेरेंट, एज एन एडल्ट, वी आर द रोल मॉडल फॉर आवर चिल्ड्रन. जब हम अपनी सिचुएशन को, कोई भी एग्रेसिव सिचुएशन को, कोई भी मतलब जो सिचुएशन ऐसी हो गई जिसे हैंडल करना मुश्किल है, हाउ कामली, हाउ कंपोज्ड वे वी आर हैंडलिंग दैट सिचुएशन, child will also learn and understand this is how I can also learn, I can also handle my situation in a proper and a composed way. Yeah. So as a parent, we have to become role model for our children. Yes. Now comes the special skills. What are the special skills to calm down our aggression or calm down our children aggression? Anybody has any views or any insights for this? What are the special skills what we need? Other than that, what we spoke about, what are the other special skills what we need? Anybody can say, anybody can unmute. Dear parents, you can unmute yourself and say something. What are the special skills what we are looking for to make our children calm, or first to make ourselves calm and handle the situation properly? Okay, I'll tell you. First, we have to analyze the situation. Yeah. What is that? Analyzing the situation, what has happened, how it has happened, and what can be the outcome of this. Okay. These are all special skills what we have to look on. Okay. And communicating. Communication, अगर हम ठीक से हमारी बात को communicate कर सके, तो 80% to 90% problems वहीं पे solve हो जाती है. Do you all agree with that or not? Yes, in case we are able to communicate our problems, our wishes, our demands, our situation in a proper way, 80 to 90% problem will get solved there and there itself. Do you all agree with me? Yes, parents? You can write in the chat box. Parents can count their answers in chat box. Yes. I am agree with them. Yes, Vishwa. And parents are also agreeing. Yes, when we start communicating, nowadays ज्यादा से ज्यादा समय क्या हो गया, हम अपने आप में, मोबाइल में या अपने सोशल सर्कल में ही बिताते हैं. मोस्टली ऐसा ही हो गया. Our channels of communication have become so difficult. We are not available for the child. We are not available for ourselves also sometimes. कि हम आगे हमारा क्या स्टेप है, हम करना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली. करेक्ट. सो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट स्किल, is a major skill where we can sort out the things very easily and very simple way. Sit, communicate, listen, and the things are sorted out so easily. Yes. तो आप अपने बच्चे को कम्युनिकेट, आपके चैनल, आपके जो भी कम्युनिकेशन चैनल है, इट शुड बी ओपन. यू हैव टू मेक श्योर आवर चिल्ड्रन दैट
Whatever happens, it can be good, bad, happy, angry, anything. Okay, I am there. I am there to listen to you. I am here to protect you. I am there to solve your problems. That skill has to be built in child. Definitely they'll come and communicate with you. They'll come and converse with you. Mama, ye hua, Papa, ye hua. This is what I did. This is what the other person did. This is where I went wrong. This is where the other person went wrong. This is where I dealt with the situation so effectively. Yes. So communication skill is a very, very special skill. Once we have that skill, then 90 to 99% problem wahi pe solve ho jati hai. It is just like brushing up the things and just solving the things in a better and proper way. Yeah. So keep your communication channel open for children. Let them learn. Let them also communicate and watch out what they are seeing, what they are viewing on social media. That is also very, very important. Nowadays, to keep ourselves engaged with our work, our friends, our family and all, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है. इवन मैं भी काफी एज आई डील विद द पेरेंट्स डे इन एंड डे आउट. मोस्टली ऐसा ही होता है जब हमें कुछ बात करनी होती है एज एन एडल्ट, वी वांट टू टॉक समथिंग और वी आर बिजी इन समथिंग. सबसे बेस्ट थिंग क्या होती है, बच्चे को मोबाइल दे दिया, यू प्ले विद दिस, लेट मी टॉक टू माय फ्रेंड, लेट मी टॉक टू माय फैमिली पर्सन, लेट मी डू दिस. या that is the best solution what we feel. But is it a best solution? It is not a best, or it is not a solution. Still we are giving the child is exploring all the social sites and everything, right? We don't know what is that the child is visiting. So we have to control that, that in case the child is seeing something which is more of kind of things which has racing, more of fighting, more of words which the child has should not be using all those words. All those kind of words are being used in dialogues and all. Definitely, child will explore, child will experiment all those kind of situation, all those kind of words, all those kind of scenario, right? So we have to control all those kind of screen time as well. Yeah. So are you all parents? Are you all ready, or are you all there to do all those things with your children? Yes. Yes. Yeah. Yes. Yes. Wonderful. Yeah. So Wonderful. I must say, Anita ji, our audience is very, very, attentive today. So they are so much into the session कि वो ना एकदम मतलब वो implement 101% करेंगे ऐसा लग रहा है. Because And definitely. And I would say this participation of active participation makes us also very energetic. When Exactly. parents are active, we also feel more active, more energetic as well. Yes. Yes. With this, I would like to say that we do have wonderful things coming up into this session. After this session, we will be having a Q&A session also. We will be announcing the winner of the one of the competition which we ran into the WhatsApp group, as well as we do have one of the two beautiful gift actually for you. Okay, so just be with us and enjoy the session. Yeah, ma'am. Please go ahead. Yeah. So let us go to the last segment of today's workshop. Now, how to deal with the situation. Okay. Just imagine one situation is here now. Now you don't have anything to think about it. You don't have anything to do any other thing about it. On spot, you have to solve that situation. You have to diffuse that situation. So what are we doing? Do you have any inputs, or do you want to share something? Any of the parent, do you want to share something from your end? Ki ye situation hai, then that is how I stay calm and I tell my children to do this, and it really works as wonder. Anybody wants to share something? Okay. First thing, what I would say, as a parent, as an adult, staying calm and composed, that is a thing, okay, that we are doing also, right? And next thing, what we can do, we can validate the situation and we can say, yes, I can see that you are angry. Can we do this thing? Can you speak about it? Yeah.
or we can give a child counting 1 to 10. The child has to count in mind. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. To calm down the situation, to calm down the mind, to calm down the emotion. Yeah. We can go and tell child, I can see that you are feeling unhappy. It's okay to feel unhappy. How can we work on it? Okay. There are 4 to 5 things which works wonderfully. Okay. You just have to go say and it will work. Okay. You can hug child. Okay. Hugging and kissing will work wonderfully. Okay. You have to go and hug child. I can see that you are feeling unhappy. Do you want to share with me what is that disturbing you? Just and end of it. Okay. Definitely child will share what is that he's feeling and what is that he wants to do. Okay. Next thing, what we can do, as I said, counting also will work. Redirect the direction. The child direction is for some few minutes only. You can redirect the direction. If the child is asking for something, you have to redirect that direction to the child. Yes, you can take that also, but for a time being, can we see that? Can we look at that? How interesting is that? Okay, are you interested to play with that? Okay, something like that. These things will work wonderfully. Okay, I know that you are angry. This sentence also, this strategy also will work very wonderfully. I know that you are angry. You validate that situation, that child is feeling angry. You validate that. I know that you are angry. Can we use in words? Okay, what are you feeling? You can use words. There are words which you can use to express your feeling. Yeah. So these and all strategies will work wonderfully. Yeah. So I hope parents, the session, the workshop was wonderful and informative for everyone. In case you have any doubts or any incident you want to share with us, you can go on and share with us. Yes, we do have many of the parents over here, and yeah, I would like to ask that Shweta ji, testing, Namrata ji, Rachna ji, Veena ji, Shreya ji, Zayomi, Rakshit, Priyanka ji, Prachi ji, anyone would like to share anything regarding this session? Okay, you can share right now. Second is we will be also opening a question and answer session very soon. So yeah, any inputs for this session? Can I ask you all a question? How was the session? Does this session really help you people or not? आपको लगता है कि इसमें इस सेशन में जो हमारे साथ स्ट्रेटेजी शेयर की गई, जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की गई, वो आप लोगों को हेल्प करेगी? यस, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? Okay. Okay, Namrata ji says thank you. Yeah, Namrata ji says thank you very much for your input. Rakshit ji says very helpful, wonderful. With this, I would also like to run a questionnaire that what kind of topic would you like to see into this platform? Yes, Prachi ji, thank you very much for your feedback. आप किस तरह के टॉपिक इस प्लेटफॉर्म पे आप देखना चाहेंगे कि जिसके ऊपर हम सेशन लेके आए? Anyone would like to share any of the topic right now? You can share into the chat box. Okay. Okay. Yeah. Physical activity for kids. Yeah, Prachi ji, आपका अगर कोई question है तो please ask your question. No issues. If you have any question, then you can please ask your question. You can unmute yourself. Prachi ji, can you unmute yourself? Hello, Oh, sir. yes, Hi. yes. Just Sir, a minute. actually, I was trying to say it will be better if next session will be on like physical activities for kids. That's what I was trying to say. Okay, so Okay. you want us to design a session on the physical Yes. activities for the kids? Yes, because mostly everything is covered, and I'm your regular viewer, so I know most of the topics now. No, we are working on the same. We are working on the same कि हम physical activity के बारे में कुछ session लेके आए. Thank you very much for your input. Yeah, Rachna ji also asked home activity and physical activity.
definitely we can work on that. Yes, and we will do something about it. And ये दोनों टॉपिक का हमने लिस्ट में ले लिया है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं. But yeah, before that we go further. I would like to say that all you people जो यहाँ पे इस सेशन में अवेलेबल है, you people came to this session, and that's why we would like to share a token of gratitude to you. And this product which we have designed for newborn babies, this product is named as a sanctuary. जब भी आप लोगों को शायद तक पता ना हो, बट जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो बाकी सारी सेंसेस में उसकी डेवलपमेंट होती है, बट उसकी जो विजुअल सेंसेस होती है वो विजुअल सेंसेस काफी लो होती है, उसको डेवलप करना बाकी होता है, बिकॉज वॉर्म के अंदर लाइट नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से बच्चे की आई साइट जो है वो आई साइट इतनी डेवलप नहीं हो पाती. एंड दैट्स वाई जो भी इन्फेंट्स है उसके लिए कॉन्ट्रास्ट फ्लैश कॉन्ट्रास्ट कलर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी विजुअल साइट डेवलपमेंट के लिए. Okay, so if anyone would you like to give this product to anyone जिसके घर में अभी newborn baby है, infant है, so this is a wonderful gift, and you can order this product on a very special discounted rate because you people are here into this session. The MRP of this is 1996, but right now you will be having a privilege to get this product in just 1119 rupees. Okay, and उसकी जो स्पेशल लिंक है वो ऑलरेडी हमारे चैट बॉक्स में दी गई है, एंड जो हमारा कूपन कोड है वो है न्यूबॉर्न. Okay, understand this product has 4 different varieties. The very first one 0 to 3 month के लिए different flash card है, which is specially black and white, जो contrast color है वो यहाँ पे यूज होता है. The second one we introduce some kind of color जो कि 3 से 6 मंथ के लिए यूज होता है. उसके आगे हम अलग अलग पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और लास्ट जो हमारा जो प्रोडक्ट है इस सीरीज में, दैट हैज सम काइंड ऑफ पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर आते हैं. तो इट इज अ कंप्लीट विजुअल डेवलपमेंट फॉर द किड. ओके, एंड दिस कुड बी यूज फॉर 0 to 36 मंथ के किड, उसके लिए ये प्रोडक्ट्स यूज की जाती है. So yeah, with this I would like to go further and announce the winner of the traditional dress competition, and the child's name is Arhat Dole and parent name is Prachi. Oh, Prachi ji. Wow, I believe you are there, right? Prachi ji is there. Yes, I'm here. So congratulations, Prachi ji. Thank you so much. Yeah, so wonderful baby. And once again I would like to say that everyone, we are not judging this, each and every child is special, so हम उसको किसी और specific way में judge नहीं करते हैं. It is a random selection. So congratulations Prachi ji, आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आपका जो गिफ्ट है वो आपको मिल जाएगा. Okay, thank you very much for this. So much. Yeah, and yeah, with this I would like to say that everyone in this session is special, and that's why we have created a wonderful book named as a Manage Angry Birds. आपके जो छोटे छोटे एंग्री बर्ड्स है उसको कैसे मैनेज किए जा सकते हैं, उसके लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत मेहनत करके एक बुक बनाई है, ई बुक, जो आप सबको हम गिफ्ट कर रहे हैं. एंड इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज. यू कैन क्लेम दिस ई बुक with the link which has been given into the chat box. So please download that ebook and reap the benefit of this. And yes, with this I would like to open the session for the Q&A. If you have any kind of question, आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो right now you can ask the question and we can answer you. Our parenting expert as well as we can answer your questions. Please go ahead. So I believe there's no question. If anyone has any question, they can unmute yourself and you can ask the question, please. Wow, the session was so perfect. किसी को कोई question नहीं है. I have one question, but for parents. Yes, Anita ji, you can definitely. As I told, we are going to make a list. So how many of you are making a list today? Or maximum by tomorrow? Yes, I'll be definitely making the list because it will help me for my personal growth also. Yes. It is not just about kid, it is about me also. So yeah, and yeah, I have मुझे किसी ने ये बहुत ही अच्छी लाइन बताई थी कि पेरेंटिंग को पेरेंटिंग क्यों बोलते हैं. It is a question for all of you. If you would like to answer this question, पेरेंटिंग को पेरेंटिंग क्यों बोलते हैं? Anyone would like to answer this?
So I got the wonderful answer into that interview that parenting को parenting इसलिए बोलते हैं because parents को change होना है. Actually, Yeah. it is rather changing a child. We have to change our perspective, our behavior. Yes, definitely. Okay, so if there is no question, then we can conclude this session. And thank you very much, Anita ji, for this wonderful insights. बहुत सारे parents ने बहुत सारी चीजें सीखी है. जो parents हमारे साथ Facebook group में connected नहीं है, please join us on the Facebook and reap the benefit of all the content which we are providing. हम बहुत सारे अलग अलग लोगों के interviews लेके आते हैं जो आप लोग कभी भी सुन सकते हैं. If you are working even, तभी भी आप वो सुन सकते हैं because we are putting it onto the Spotify also. YouTube पे तो है ही, बट हम Spotify पे भी वो हम शेयर करते हैं ताकि आप काम करते करते, जॉगिंग करते करते, बच्चों का टिफिन बनाते बनाते, कुछ भी करते करते आप ये सारी चीजों को अपने लाइफ में ला सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके और Sir, I आपकी have पेरेंटिंग जर्नी question. काफी अच्छी बने. ओके, yes, we do have someone who wants to ask the question. Just a minute. Hello. Yeah, just a minute, ma'am. Just a minute. Let me. Who wants to ask the question? Veena ji? Yes, sir. I want to ask question. Yeah, I have so much. let me put you into the spotlight. Now you can ask the question, ma'am. Yeah, please. If my kid allow me to ask, actually he Yeah, just yeah. wake up. Hello. Hello. Good Yeah. evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, Veena ji. Yeah. Am I visible? Yes, Maybe yes, not. you are visible. You are visible. That's Actually, fine. today I'm discharged from hospitalized because I have dengue fever from 15 to 14 days. Okay, So okay, my question is, my toddler is 3 years now, okay, and he's very much aggressive. He's too much heights of everything. okay, Like means वो अभी बोलता नहीं है, ठीक, एंड वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को बाइट करता है और मतलब बहुत गुस्सा करता है. छोटा उसका एक और ब्रदर है, ही इज 1, तो उसको भी मतलब को भी ऐसे चिकोटी काटता है, कभी बाइट करता है. तो आई फील मेरे को मतलब मेरे माइंड में ये है कि उसको ऑटिज्म है. मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है. मेरे okay. माइंड में सिर्फ ऑटिज्म है एक, और मुझे लगता है मुझे भी ऑटिज्म ना हो जाए कहीं. नहीं मैम, first of मतलब all, adulthood autism, I think. okay. First of all, prayers and wishes for your speedy recovery. Okay. First Thank you thing so is much, that, ma'am. yeah. अभी आप जो आपकी concern बोल रहे हैं, now child is 3 years old. Yes. Yeah, ma'am. Yes. So is he not speaking at all? Not a single word or no? Hello. He says mama, papa, de do, Oreo, like Oreo ko Oreo, something like that. Okay. And all gestures. He has all the gestures. Okay. So Like कुछ देना है तो फ्रिज खोल लेगा अपने आप. So he's showing some actions and gestures, correct? Yeah, he's a baby, right? Yeah. Oh, okay. Very sweet. Yeah, Very he is. smart. Yeah. So आप Come here. पहली बात तो ये है कि उसका अभी तक स्पीच डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी थिंग्स इनसाइड व्हाट ही वांट्स टू एक्सप्रेस. उसे एक्सप्रेस करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है. करेक्ट? कर नहीं पा रहा है. सो दिस इज ये एज है जहाँ पे उसकी कुछ और वर्ड्स वोकेबलरी डेवलप होनी चाहिए. यू ट्राई फ्रॉम योर एंड, आपको अपनी तरफ से ट्राई करनी है. सी इट इज नॉट चाइल्ड स्पीकिंग और नॉट. बच्चा बोल रहा है मम्मा पापा दे दो, 3-4 वर्ड्स तो बोल रहा है, ठीक है. क्या होता है ना, एज अ पेरेंट्स वी आर रियली वेरी प्रोएक्टिव. बच्चे ने पूछा या एक्शन भी किया तो वी आर हियर टू सर्व एंड फुलफिल हिज डिमांड. करेक्ट? तो उसको आप एंकरेज करिए, वर्ड्स में बोलने का एंकरेज करिए. लेट हिम अटेम्प्ट. Okay. Unless and until, I'm not saying be very rigid. Don't be rigid. Okay. लेकिन उसको एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पे वो बोलने की कोशिश करे. ये चीज को ये बोला जाता है, खाना को खाना ऐसे बोलना है, पीना को पीना बोलना है. मतलब करेक्ट एक्शन भी करना है और बोलना भी करेक्ट है. सॉरी टू इंटरप्ट. ये मतलब एक्चुअली ये है, अगर मैं इसको बोलूंगी किचन में जाओ एक गिलास रख के आओ तो ये नहीं सुनता है. अगर इसको बोलूंगा आओ ओरियो खाओ तो ये सुन लेगा, आओ डेयरी मिल्क खाओ तो ये सुन लेगा.
अगर मैं छोटी छोटी चीजें जैसे बोलती हूँ कि छोटे भाई को प्यार करो, तो ये प्यार करता है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा चीज बोलूंगी, जाओ फ्रिज बंद कर दो, तो ये फ्रिज बंद नहीं करता। मतलब सेंसेस डेवलप नहीं है, या फिर माइंड इतना नहीं, पीछे डेवलप है। है, सी आप जैसे बोल रहे हैं उस हिसाब हाँ, से जो उसका इंटरेस्ट है वो काम कर रहा है वो, करेक्ट। हाँ, इंटरेस्ट पे काम, एग्जैक्टली। वो अभी मैं बोलूंगी चलो वही, घूमने चलना है, तो अभी ही इज रेडी, वो अभी घूमने को तैयार हो जाएगा। अभी उसको बोलूंगी ना कार देखो, वैन आएगी, कार आएगी, कार आएगी, तो मैम वो किसी भी कार में घुस जाएगा। ऐसा है, इतना हाँ, ऑब्सेशन है इसको। तो वही है, उसका इंटरेस्ट है वो काम कर रहा है वो, ठीक है। जो उसका हम्म। इंटरेस्ट नहीं है, ही इज नॉट बॉदर कि आप जो हाँ, बोल रहे हैं, ही इज नॉट बॉदर एट ऑल। उसको कोई मतलब नहीं है फिर क्या हो रहा है। करेक्ट, करेक्ट। हम्म। तो वो इंटरेस्ट डेवलप करना है आपको, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप आप कैसे हम्म। करोगे? छोटी छोटी चीज पे उसको एक्नॉलेज करना है। यू डू दिस, यू विल हैव अ स्टार चार्ट। से जैसे आपने कोई स्टार चार्ट बना लिया घर में, आपने प्लेस कर लिया, डिस्प्ले हम्म। लगा लिया, आप ये कर रहे हम्म। हो आपको ये स्टार मिलेगा, आपको ये कर रहे हो आपको ये मिलेगा। या आपने कोई ऐसे जार है, उसमें आपके स्टार्स आपके काउंट हो रहे हैं, देखो आप ये काम कर रहे हो, मैं आपको एक स्टार दे रही हूँ, ठीक है। हम्म। आपने नेक्स्ट ये किया है, आपको ये स्टार मिला है। अगर 10 स्टार आपने काउंट कर लिए पूरे, आपने 10 स्टार गेन कर लिए, तो आपको ये चॉकलेट या ये ओरियो का बिस्किट मिलेगा। व्हाट यू हैव टू वर्क एज पर हिज इंटरेस्ट, ओके। नहीं तो ही विल बट नॉट मैम ये लिसन टू यू छोटी सी एज चीज, पर। मतलब एक छोटी सी चीज को मैं इसको कैसे इंटरेस्ट दिलाऊं कि लाइक अगर ओरियो चॉकलेट, ओरियो रखा है और आइसक्रीम रखा है, सपोज जो भी रखा है, मैं इसको ये कैसे बोलूं कि ये इसके ये टास्क कंप्लीट करने के बाद मिलेगा, क्योंकि ये तो पहले ही उसको छीनने के लिए चल तो जाएगा, या फिर आपको ऐसे अपना थोड़ा सा टेंट्रम फर्म शो होना करेगा। पड़ेगा मैम उसमें, या तो अराउंड अराउंड योर एटमॉस्फियर, जो उसकी ये हम्म। चीजें हैं वो आपको थोड़े दिन के लिए कम करनी पड़ेगी। जैसे द ओरियो एंड ऑल व्हाट ही इज हैविंग ना, मतलब हाँ, मुझे ऐसे आप जैसे बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है फ्रीक्वेंटली वो खा रहा है, फ्रीक्वेंटली वो अब कंज्यूम कर लास्ट, रहा है। मैं इसको पता नहीं मैम, मैं पढ़ पढ़ के ना GFCF डाइट पे आ गई, मैंने इसको 3 महीने से कुछ बंद किया हुआ है। हाँ, मैं अपने कंप्लीटली। आप ही GFCF कर रही हूँ इसका मैम। करेक्ट, करेक्ट। थोड़ा तो मतलब फर्मनेस होना, टोन में और आपकी बोली में फर्मनेस होना जरूरी है। आपको ये काम करना है, आपको ऐसे करना है, आपको करना पड़ेगा। सी, हम्म। आई विल टेल यू वन एग्जांपल हियर। अगर अभी हम्म। आपका ऐसा ना हो, अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो जाए, एक छोटा सा समझो खांसी जुकाम ही हो जाए बच्चे को, ठीक है। तो अगर बच्चा अगर हम्म। ना बोल रहा है हम्म। मुझे ये दवाई नहीं लेना है, विल यू एग्री, विल यू एक्सेप्ट दैट कि मैं बच्चे ने मेरे ना बोल दिया मैं नहीं दूंगी, विल यू एक्सेप्ट नो, दैट? नॉट एट ऑल। No, na? Right? नो। Still, you will give that, right? हम्म। Somehow you will make some tricks, somehow you make हम्म। some tricks or something, but you will give him because it is going to हम्म। helpful for him, right? या तो वैसे हम्म। ही ट्रिक आपको करनी या है, आपको सोचना है और वैसे ही वो चीज करनी है जो बच्चे के लिए अच्छा है, वो हमें करना ही है। See, child will not cooperate like that. How हाँ। we expect, child will not cooperate. हम्म। राइट? लेकिन हमें पता है हमारे यस बच्चे के मैम। लिए ये चीज अच्छी है, हमें करनी है, तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स टिप्स लगा के वो चीज करनी है। विच एवर वे इट वर्क्स वी एग्जैक्टली। हैव टू डू। लेकिन मैं आपको हम्म। ये सजेशन जरूर दूंगी, बच्चे को अभी वो सीख रहा है बोलना, उसको और अपॉर्चुनिटी हम्म। दीजिए, उसको बोलने की अपॉर्चुनिटी देना आपके लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी अ स्पीच डिले फॉर हिम। ओके, आपको अपॉर्चुनिटी देनी है। हम्म। कैसे देनी है? एक या दो बार वो चीज मांगे तो आप मतलब दूसरी चीजों को भी उसको बोलिए, ये चीज को ये बोला जाता है, इसको बॉटल बोला जाता है, इसको पेंसिल बोला जाता है, इसको शर्ट बोला जाता है, इसको हेयर बोला जाता है। सब चीज को एक नाम दीजिए, क्योंकि सब चीज का एक नाम होता है, जी। ठीक है। आप वो बोलो, हम्म। आप भले ही एक शब्द बोलो, उसका पूरा नहीं बोल पाए, लेकिन एक शब्द बोलने के लिए आपको इंकरेज करना है, और आपको उसका पूरा शब्द बोल के उसको बताना है कि ये चीज को ये बोला जाता है। आप धीरे धीरे वो बोलने लगेगा वैसे। और अगर आपके अटेम्प्ट से भी न बोल पाए, तो आपको स्पीच हम्म। उसके मतलब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी 3 years डॉक्टर ओल्ड। को कही थी मैम, डॉक्टर को दिखाया, जो भी उसका माउथ का टंग का दिखते हैं वो सब ठीक है। अभी मैं इसकी 4 मतलब जून से इसकी स्पीच थेरेपी करा रही हूँ, बट नो इम्प्रूवमेंट एज सच सीन। मैम दैट इज अ स्लो प्रोसेस, ओके। आपको रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन केस समथिंग विथ एनीथिंग विच वर्क्स विद अ चाइल्ड, इट इज अ स्लो प्रोसेस। हम क्या होता है एज अ पेरेंट, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन पेरेंट एज अ चाइल्ड विल नॉट शो रिजल्ट इमीडिएटली, इट विल टेक टाइम, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन ओनली विल शो द रिजल्ट। ओके, तो Okay. आपको स्टे काम और कंपोज रहना है, और यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। Okay. Can I share some of my inputs in that? यस, यस सर, प्लीज। ओके वीना जी, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर आप जी। बोल नहीं पाते हैं, कैन यू हियर मी?
आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, सो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आप बोल नहीं पाते हैं तो आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आप कुछ भी, आपको गुस्सा आता है या फिर कुछ भी चीजें आपको बोलनी है तो आप कैसे करेंगे? आप अटेंशन कैसे ग्रिप करेंगे? अटेंशन सर, अगर मेरी बात नहीं समझ रहा तो मुझे गुस्सा आएगा, फर्स्ट थिंग वही होती है, फर्स्ट थिंग एग्जैक्टली। वही है ना? होती है। तो यस, सबसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर उसके पास वोकेबलरी नहीं है, उसको बोलना नहीं आता है, तो मतलब वो बोल नहीं पा रहा है, एंड दैट्स व्हाई कई बार उसको ये चाहिए कि आप उसके सामने देखें, बट एक बार दो बार में आप नहीं देखती हैं तो उसको ये जी, पता नहीं है कि मैं क्या बोलूं जिससे कि आप क्या देखें, या बोलूं फिर क्या कोई करूं, कोई और, एग्जैक्टली। राइट? और उससे हम्म। उसको गुस्सा आता है। ओके, जी। एंड दैट्स वेयर ही एक्सप्रेसेस द एंगर इन द फॉर्म ऑफ, जो कुछ भी चीजें वो करता है उसमें वो एंगर को शो करता है, राइट? ओके, जी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आपका जो रूट कोज है वो उसकी स्पीच है। अगर उसको जी। बोलना आ गया, ओके, तो हम्म। आपका यह प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड थिंग, बोलना कैसे आएगा? तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप जितना ज्यादा यू जस्ट आपने, मैंने, अनीता मैडम ने, हम सब ने कैसे सीखा कुछ भी बोलना? हमने जितना जी। ज्यादा सुना उतना ज्यादा हमारे वोकेबुलरी पावरफुल हुआ, और उतना ज्यादा हमने बोलना शुरू किया। हमें तब पता चला कि एप्पल को एप्पल बोलते हैं जब हमारे आसपास के लोगों ने एप्पल को एप्पल कहा। जी। ओके, और वो हमने सुना। तो कहने का मतलब, जितने ज्यादा शब्द ये बच्चा सुनेगा उतनी ज्यादा वोकेबलरी उसकी पावरफुल होगी, और जितनी ज्यादा वोकेबलरी उसकी पावरफुल होगी उतना ही जल्दी वो बोलना सीखेगा। जितना जल्दी वो बोलना सीखेगा उतना जल्दी वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेगा, और उसका एंगर का जो इश्यू आप बता रहे हैं वो सप्रेस हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, जी। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज, आप ज्यादा से ज्यादा नए नए शब्द अपने बच्चे को सुनाने हैं और बताना है, सुनाने हैं और बताना है। ओके, जी। एंड डोंट यू वरी अबाउट द ऑटिज्म। ऑटिज्म ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी पकड़ के हो जाए। ओके, सर इसलिए जब ये 3 महीने का था, सर 3 महीने का तो मतलब न्यूक्लियर फैमिली है, जॉब के से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। तो मैंने जब 3 महीने का जो इसने अलटना पलटना स्टार्ट किया था, तब से मैंने इसको फोन ऐसे लगा के दिया था, ऐसे लगाया था। तो जब ये अभी 3 साल का पूरा हुआ है, तो अभी जाके मैंने इसका मतलब 3-4 महीने से इसका मैंने फोन बंद, आई थिंक मुझे लगता है इसको वर्चुअल ऑटिज्म भी है, क्योंकि ये फोन ही दिखता था। ये सबके फोन में नहीं, बस मेरा फोन ऐसे मतलब सर इसको फोन का A to Z पता है कि सेटिंग में जाके ये इसको ब्राइट करना है, इसको लो ब्राइट करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऊपर स्लाइड करना है, नोटिफिकेशन बंद करना है। मतलब सर ये वर्चुअल ऑटिज्म में हो गया क्या सर इसको फोन देखते देखते? मतलब मैं बहुत वैसे ही पूछ रही हूँ क्वेश्चन थ्रू आउट, बट मैं क्या करूँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ। ओके, एक और चीज, आपने बहुत जल्दी फोन का इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करवा या दिया। हाँ। दैट इज ऑल्सो अ थिंग, बट नेवर माइंड, जो समय चला गया है वो चला गया है, बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन इट नाउ। ओके, या मिनिमाइज करिए फोन का यूज, नहीं जहां तक मैम, हो अब फोन मिनिमाइज करिए। फोन अप्रैल से बंद है इसका, मैं मतलब अब फोन दिखता ही नहीं, मतलब इतना हो गया कि फोन नहीं दिखता है। हाँ, तो एक यस, टास्क आपने अचीव कर लिया, वेरी वेरी गुड। द हाँ मैं नेक्स्ट बहुत टास्क, खुश हूँ। वो या टास्क अचीव करने के साइड रिजल्ट्स आपको अभी जो मिल रहा अभी है दिख वो रहे उसका हैं। एंगर एंगर वगैरह है, बट दैट इज एंगर, नो हाँ। नॉट एन इश्यू। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा अभी अभी एक इंटरव्यू हमारा एक हुआ है हम्म। मिस खुशबू अग्रवाल के साथ, जो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे शायद तक एक दो दिन के अंदर वो लाइव हो जाएगा। सी इज हम्म। स्पेशलिस्ट, वो क्रिएटिव मदर मदर करके उसका पूरा हैंडल है, और वो यही काम करती है कि एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा कैसे इन्वॉल्व हो, नई नई एक्टिविटीज उस बच्चे की लाइफ में। और हम्म। दैट इज अ वेरी क्रिएटिव आइडिया, उसके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज है जिससे कि आप अपनी स्क्रीन टाइम वगैरह कम कर सकते हो और बच्चे को ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हो कोई भी चीज में। ओके, हम्म। सो वो हम्म। एक इंटरव्यू आप जरूर सुनिएगा, और आपका जी। अगर कुछ नो क्वेश्चन हो नो तो नो उसको, नो, प्लीज नो। हाँ, इंटरव्यू के अंदर आप वो क्वेश्चन को पूछिएगा, उसके अंदर में जहाँ पे भी हमारा यूट्यूब पे या तो फिर आप स्पॉटिफाई में, आपको डेफिनेटली हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, आपको आंसर करेंगे। तो सर एंड हम यस, मतलब उसमें तो वीडियो है, तो उसमें क्वेश्चन कैसे आस्क करेंगे? लाइव लाइव है क्या वो? नहीं मतलब आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ तो सकती है, कमेंट, वीडियो भी ओके है, कमेंट। यूट्यूब में भी है और स्पॉटिफाई में भी है। अगर आपको ये वीडियो नहीं देखना है तो आप स्पॉटिफाई में सिर्फ ऑडियो भी उसका सुन सकती हो। ओके, सो ओके। वो एक सुनिएगा, आपको काफी हेल्प करेगा। एंड सेकंड थिंग इज, एक और इंटरव्यू हमने लिया था मिस डॉक्टर रश्मि का, आई बिलीव शी वाज अ प्ले थेरापिस्ट। बच्चों को कैसे खिलाता खिलाता, मतलब गेम प्ले करते करते सारी चीजें सिखाई जाए। और वहां पे उन्होंने ये अलग अलग मेथोडोलॉजी तो बताई है, बट उससे भी ज्यादा बच्चा चीज ये बताई है कि भाई ऑटिज्म क्या है और ऑटिज्म का पूरा स्पान क्या होता है।
जैसे अगर आप इंडिया में बोलोगे तो ऑटिज्म का डेफिनेशन क्या है, हर एक डॉक्टर का ऑटिज्म का डेफिनेशन अलग है, लेट मी टेल यू। तो मैं पर्सनली बताऊं, अगर मैं किसी को बताऊं ऑटिज्म, तो वो सोचते हैं कि अरे उसके बच्चे के दिमाग में कुछ है, ऐसा ये है इंडिया में ऑटिज्म। इंडिया का ऑटिज्म ही ये है। मैं वही बता रहा हूँ कि हमने जब रश्मि जी के साथ इंटरव्यू किया तो उसने बताया कि यूएसए में ऑटिज्म का पूरा डेफिनेशन ही अलग है, यहाँ पे ऑटिज्म का डेफिनेशन अलग है, इवन हर एक डॉक्टर का ऑटिज्म का डेफिनेशन अलग है। तो पहले तो अपने बच्चे को लेबल मत कीजिए कि उसको ऑटिज्म है क्या, करेक्ट। क्योंकि जितनी बार आप बोलेंगी कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, उतनी बार आप अपनी सर बिलीफ वो ना फॉर्म माइंड करेंगे। में आ गए, मतलब ऐसा होगा कि कुछ भी होता है ना, किसी डॉक्टर के पास कुछ भी लेने जाता है ऑटिस्टिक, मतलब एक, मतलब वो अपने आप नेचुरली, पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे को इतना, मतलब मैं इतना पढ़ चुकी हूँ उसके बारे में, मैं अपनी सर्च हिस्ट्री भी रिमूव कर लेती हूँ, फिर भी मेरे माइंड में वो चीज आती है। सर मुझे लगता है आपने मुझे भी कोई बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो गया है। डीपली उस चीज को ले लिया है। एग्जैक्टली, हाँ। करेक्ट। तो आप उस चीज को इतना डीप मत करिए कि वो जो एक इमेजिनरी है वो सच्चाई बन जाए। एग्जैक्टली। करेक्ट। वो अभी इमेजिन में है, ठीक है, आप उसको सोच सोच के उसको सच्चाई बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ। आप उसको सच्चाई में मत लेके आइए, ठीक है। हम्म। हो सकता है या नहीं हो सकता है, उससे पहले आप क्यों कंक्लूड कर रहे हैं, आप कंक्लूड मत करिए ऐसे, ठीक है। क्योंकि मैम जब मतलब सेम एज ग्रुप के बच्चों में डिफरेंस देखती हूँ ना, देन आई फील कि कुछ तो है मिसिंग, कुछ तो है मिसिंग, मतलब फिर मेरे कुछ को तो मिसिंग लगता है कि यही है, उसकी पार्क में जाना ही वोकेबलरी नहीं है। आपको डेवलप करनी है। वोकैबुलरी नहीं आई। वोकेबलरी अगर एक बार डेवलप होती है, वो इसलिए मैं हम्म। आपको बोल रही हूँ, प्रोएक्टिवली उसको मत दीजिए जो भी चीजें हैं। एज ए पेरेंट वी एक्ट प्रोएक्टिवली। ज्यादा से ज्यादा हम्म। जो चीज अगर बच्चे ने इशारा भी कर दिया तो हम फट से लाके वो चीज, चलो ले लो, कर लो ये काम, हम्म। ठीक है। डोंट डू जी। दैट, ट्राई गिव हिम वर्ड्स कि ये चीज का ये वर्ड है, आपको ऐसे बोलना है, गिव हिम और वर्ड। या एंड यू कैन यूज अ फ्लैश कार्ड, बिकॉज फ्लैश कार्ड में आपकी वोकेबलरी काफी बढ़ेगी। वी डू हैव अ फ्लैश कार्ड ऑफ हम्म। 27 डिफरेंट कैटेगरीज, तो हर एक कैटेगरी के आपको बहुत सारे वर्ड्स उसके अंदर मिलेंगे, एंड उसके साथ आप अलग अलग एक्टिविटीज भी कर सकती है। उसका हमने एक सेशन भी किया हुआ है कि फ्लैश कार्ड का डिफरेंट तरीके से कैसे एक्टिविटी बेस यूज करके बच्चों को खिलाते खिलाते आप उसको सिखा सकती है। तो यू कैन यूज द फ्लैश कार्ड फॉर द सेम, जिससे कि आपकी वोकेबलरी काफी अच्छी हो जाएगी बच्चे की, राइट। या। ओके Yeah. मीना जी, आई होप कि हमने आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है। हेलो उठिए सर। सो या एनीवन एल्स वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज। ओके सो या आई बिलीव और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन, बट वंस अगेन the next workshop is on 25th of November and the workshop's name is Art of Autism. Please register for that workshop and understand what exactly autism is, और autism के आप सही में आप ऑटिज्म है या नहीं है, वो सारी चीजों के बहुत सारे मिथ्स जो है वो हमारे पेरेंटिंग एक्सपर्ट वहां पे बस करने वाला है। सो प्लीज जॉइन अस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, एंड या थैंक यू, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दशहरा इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही ज्यादा आपकी पेरेंटिंग जर्नी जॉयफुल हो, ये हम दिल से विश करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। ओके, थैंक यू। Same wishes from my end also. Happy Navratri and happy Dashera in advance. ओके, Thank you so much. Bye bye. बाय एवरीवन।